It's time for martial law and fundamental rights. Okay, Article 34. It's for restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area within territory of India. Okay, so it empowered the parliament to indemnify any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law is in force. So basically, if martial law is in force, then your fundamental rights are being fucked up. So the parliament can also validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeit orders or any act done under martial law in such area. So parliament can validate, okay, the act of indemnity, indemnity made by the parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights. Okay, so the concept of martial law has been borrowed in India from the English common law. However, the expression martial law has been not defined anywhere in the constitution. It literally means military rule. Simply, it is a military law. Thus, imply the suspension ordinary law and the government by military tribunals. So, ordinary law is being suspended and military tribunals are being established. So it is different from the military law, and that is applicable to the armed force. So military law is only applicable to armed force. It is not military law, it is martial law, military rule. That is law, that is, this is rule. So military rule, when where your rights in is being restricted, but military rule for military law is for what? For the armed forces. That they didn't have fundamental rights, but military laws for common people that didn't. So in that manner they didn't have any fundamental rights. So in both cases the conclusion is same, where fundamental rights are being snatched from you, but apply from both different party. Military rule for people, military law for armed forces. Okay, so there is no specific or exception provision in constitution. So in Article 34, under which martial law can be declared in any area within territory of India, the martial law is imposed under the extraordinary circumstance like war, invasion, insurrection, rebellions, riot, or any violent resistance to law. So basically, if they feel that okay, the law is not being applied there, or law is being in danger, they can apply simply the martial law. So during the operation of martial law, the military authorities are vested with abnormal power to take all necessary steps. They impose restriction and regulation on the right of the civilian, can punish the civilian, and even condemn them to the death. So they have abnormal power, and as we see on northeast in Jammu Kashmir, there are many cases when their military martial law is been applied, military rule is being applied, and many people are being killed because of that. And this is it. The Supreme Court held that declaration of martial law does not ipso facto result in suspension of writs of habeas corpus. So habeas corpus is being not suspended, but other than all things are being suspended. So what is habeas corpus? You know, in habeas corpus there is that you have the body. Simply you can say that, yeah, okay, you can release that person. So it is not suspended. Other than that, every law is being suspended, everything. Okay, so there is many instances that Jammu Kashmir leaders are being held by the military. So basically, or in home. So if they go to Supreme Court and from there they issue the writs of habeas corpus, then it is okay that you have the body. Otherwise, it's so difficult for them also. Getting the point? So now, Article 34 is different from the declaration of national emergency under Article 352. So नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में डिफरेंस ये है कि मार्शल लॉ इफेक्ट करता है खाली फंडामेंटल राइट्स, लेकिन नेशनल इमरजेंसी इट इफेक्ट नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो सेंटर स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, एंड मे एक्सटेंड द टेन्यूर ऑफ द पार्लियामेंट.
So national emergency is on a whole level, on a country level, but a martial law is only the effective of fundamental rights and state level or the particular area where the martial law is being applied. So martial law second is suspend the government and ordinary law court. National emergency it continue the government and ordinary law court. Third, it imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason. So martial law is because law is been not applied, so because of that. But national emergency it can be imposed only three grounds: war, external aggression, or armed rebellions. So these are the fact. So martial fourth point it imposed in some specific area of country, but in national emergency it is imposed either in whole country or any part of it. So national emergency is diverse in that nature also. And martial law fifth point it is not a specific provision in constitution, it is implicit. So there is no special provision for the martial law, but emergency it has been specified and detailed provision in constitution it is explicit. So martial law is implicit and it is explicit. So it's basically national emergency has a detailed authority and everything and well explained thing. Now it's for Article 35, effecting certain fundamental rights. So under Article 35 lay down that the power to make law to give effect of certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature. So this provision ensure that there is a uniformity throughout India with regard to the nature of those fundamental rights and punishment for their infringement. Okay, first point, parliament shall have and legislature of a state shall not power to make law with respect to following. तो पार्लियामेंट के पास राइट है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास राइट नहीं है to make law with respect of first prescribing residence as a condition for certain employment or appointment in a state or union territory or local authority or the other authority. Article 16, so parliament have this authority to make law on Article 16, empowering court other than Supreme Court, High Court to issue direction order rates of all kinds of enforcements of fundamental rights. Article 32, this also have parliament nor the state legislature. Then third point, restriction or abrogating the application of fundamental to a member of armed forces, police force, etc. So restriction also has parliament right on that. And Article 34, in defaming any government servant or any other person for act during the operation of martial law in any area. So if any person do anything wrong in a military law, martial law, so the parliament has the authority to do anything for that. Other than you cannot go anywhere. Second point, parliament shall have and the legislature of state shall not have power to make law for the prescribing punishment for those acts that are declared to be offensive under the fundamental right. These include untouchability. तो untouchability इसमें क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट नहीं करेगा, उसके वजह पावर नहीं है कि पनिशमेंट डिसाइड कर सके. सो आर्टिकल 17 and 23 ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. Thus, the Parliament shall have the commencement of Constitution make law for prescribing punishment for the above act, thus making it obligatory on the part of Parliament to enact such law. So, Parliament have the power, state not have this power. It has to be noted. Now it's time for making of Constitution. The important part is drafting committee. Who draft the committee? Among the committee, the Constitution Assembly, the most important committee was the drafting committee set up by on August 29, 1947. Again, it is set up in August 29, 1947. So, interested with the task to preparing a draft of the new constitution is consisted of 7 members. They are first Dr. B.R. Ambedkar, Chairman. Second, N. Gopal Swami Nagar. Third, Ali Krishnan Iyer. Fourth, Dr. K.M. Munshi. 5, Sayyid Muhammad Saladullah. 6, N. Madhava Rao. 7, T.T. Krishnamachari. So, the first of the Constitution of India was published in Feb 1947. First draft published in Feb 1947. Second draft which was published in 1948. Drafting committee took less than 6 months to prepare a draft
in all set only for 141 days. So it is amazing. Now, third chapter is silent features of constitution. So first, lengthiest written constitution. So the Constitution of India is the lengthiest constitution written in the world. It is very comprehensive, elaborate, and detailed document. It consists of a preamble, about 465 articles divided into 25 parts and 12 schedules. No other constitution in the world has so many articles and schedules. Four factors it have that contribute to elephantine size of the constitution. First, geographical factors, that is the vastness of the country and its diversity. Second, historical factor, example the influence of the Government of India Act 1935, which was bulky. C. Single constitution for both center and the state except Jammu Kashmir. Fourth, dominance of legal luminaries in the Constitution Assembly. So these are the features. Because of that, it is the elephantine size of Constitution. Second point, drawn from the various source. Now, Dr. B. Ambedkar proudly claimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the constitution of the world. So they basically read all constitution in the world. Then after last, it is been formed. The structural part of constitution is to be a large extent derived from the Government of India Act 1935. The philosophical part of constitution, the fundamental right and the directive principle of state policy derive their inspiration from the American and Irish constitution respectively. The political part of constitution, the principle of the cabinet government and the relation between the executive and the legislature has been largely drawn from the British constitution. So the other provision of constitution have been drawn from the constitution of Canada, Australia, Germany, USSR, now Russia, France, South Africa, and so on. So the most profound influence and the material source of the constitution is the Government of India Act 1935, the federal scheme, the judicial governance, emergency power, the Public Service Commission, and the most of the administrative details are drawn from this act. More than half of the provision of constitution are identical to or bear a close resemblance to the Act of 1935. Third one, blend of rigidity and flexibility. Constitution are also classified into rigid and flexible. So a rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment, as for example the American Constitution. Second, a flexible constitution on the other hand is that can be amended in the same manner the ordinary law are made, as for example the British Constitution. So the rigid one is American and the flexible one is the British Constitution. So the Constitution of India is neither rigid nor flexible but a synthesis of both. So this is very important. It is neither the rigid nor the flexible but a synthesis of both. So Article 368 provide for two type of amendment. Article 368 provide for two type of amendment. First, some provision can be amended by special majority of the parliament. Example, a 2/3 majority of member of each house present and voting, and a majority that is more than 50% of total membership of each house. So some provision can be amended by special majority of parliament. Again, a 2/3 majority of member of each house present and voting, and a majority that is more than 50% of total membership of each house. So पहला पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट है, a big thing is that some other provision can be amended by a special majority of parliament and with the rectification by half of the total state. So when total state rectify that and pass in the state legislature, then on parliament by special majority, and then they pass. So at same time, the provision of the constitution can amendment by simple majority of parliament in the manner of ordinary legislative process. So notably these amendments do not come under Article 368. ठीक है. Now fourth one, federal system with unitary biases. So it contains all usual features of a federation. Federation means what? Federation means two government, divisions of power, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, and bicameralism. Okay, these are called federal system. And what are non-federal or unitary bases? So a strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated
judiciary, appointment of state governor by the center, all Indian service, emergency provision, and so on are called as unitary biases. Okay, so however, the Indian Constitution also contains a large number of unitary or non-federal features. So the moreover, the term federation has nowhere been used in Constitution. Article 1 on the other hand describe India as a union of state, which imply two things. One, Indian federation is not the result of an agreement by the state. So there is no agreement. So Indian federation is not that because of state we have Indian federation. No, that is not the case. Okay, no state has a right to secede from federation. कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ना, कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम उसके ऊपर है, ऐसा कोई स्टेट नहीं कह सकता. नो कॉन्स्टिट्यूशन हैड राइट टू secede from फेडरेशन. secede SECED from फेडरेशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है. सो हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब एज फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट. सो फेडरेशन है फॉर्म में लेकिन यूनिटरी है स्पिरिट की फॉर्म में. सो नाउ फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Again, fifth point, parliament form of government. British parliament system of government rather than American presidential system of government. The parliament system is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs. Okay, so the parliament system is also known as Westminster. The constitution established the parliament system not only at the center but also in the state. So कुछ फीचर्स हैं पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ठीक है, पहला प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स. दूसरा मेजॉरिटी पार्टी रूल होगा. थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. डी, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर. E, leadership of prime minister or the chief minister. Then F, dissolution of the lower house, Lok Sabha or assembly. So even the Indian parliamentary system is largely based on British pattern. There are some fundamental difference between the two. For example, the Indian parliamentary is not a sovereign body like British parliament. Further, the Indian state has an elected head, republic, while the British state has hereditary head, monarch. So Indian has a republic head, but in British one there is a monarch. So in a parliamentary system, whether in India or Britain, the role of prime minister has been so significant and crucial that the political scientists are like to say it is a prime ministerial government. So these are our fifth point. Now it's time for fundamental duties. So through the rights and duties of citizens are correlative and inseparable. So if we say rights and duties are different, no, they are inseparable or correlative. The original constitution contain only the fundamental rights and not the fundamental duties. Okay, so when the original constitution is being made, they didn't add the fundamental duties, they only add fundamental rights. So later in 1976, the fundamental duties of citizen were added in the constitution. In 2002, one more fundamental duty was added. So in fundamental duties, like Indian constitution are inspired by the constitution of erased USSR. Okay, so many constitution India has been inspired of. So the socialist countries on the contrary give equal importance to the fundamental rights and duty of the citizens. Hence the constitution of erased, while USSR declared that the citizens, like we take most of our fundamental duties from USSR. Okay, now the committee is being made. According to it, they suggested some unique features of it. So Swaran Committee recommendation in 1976, the Congress Party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make recommendation about the fundamental duties, the need and necessity of which was felt during the operation of internal emergency 1975 to 1977. So basically in internal emergency, need of fundamental duties are so much high that they pass this law and make committee. Okay, a separate chapter of fundamental duties in the constitution, committee recommended it. Okay, it stressed that citizens should become conscious that it, in addition to the enjoyment of rights,
they also have certain duty to perform as well as. So basically it said if they are enjoying the rights, then they have also to perform some duties. Without them, like a small child, if he's getting the all comfort thing, then also he has to perform back also. It's not like one side deal. It's two-sided thing. Okay. So 42 Constitutional Amendment Act in 1976. Again, 42 Constitutional Amendment Act in 1976 is being passed. This amendment added a new part 4th A. Part 4th A is being amended. The Constitution, this new part consisted of only one article, that is Article 51A. Again, Article 51A, which for first time specify a code of 10 fundamental rights of the citizens. So basically, it specified a code of 10 fundamental rights of the citizens. So, like Swaran Singh committee recommendation, because of that fundamental duties are being made, but certain recommendation of committee were not accepted by the Congress party. लाइक कुछ जो चीज़ थी वो रिकमेंडेड नहीं हुई थी और बाकी सब उसने कर लिया था. तो उनमें से जो चीज़ थी जो नहीं हुई रिकमेंड, वो थी पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर इम्पॉसिबल imposition of such penalty or punishment as may consider appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of duties. सो बेसिकली उसने कहा था कि अगर इनमें से अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं किया जाता तो फाइन या कुछ पेनल्टी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि कंट्री लाइक इंडिया फंडामेंटल राइट्स परफॉर्म सही से नहीं होते तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बात की चीज़ है. ओके. सो नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन in any court on the ground of infringement of any fundamental right on the ground of repugnancy or any provision of constitution. Means basically if उसको अगर पनिशमेंट मिलती है किसी कोर्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करने की वजह से, तो वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है. और थर्ड की ड्यूटी टू पे टैक्स है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए सिटीजन्स की. सो वो उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ज़रूरी नहीं है कि आगे क्या होगा, तो उनने सबको सोच समझ के ये किया. तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, 10 फंडामेंटल समाई ड्यूटीज़ हैं. उनमें से पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडेंटिकल्स इन इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. सो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ऑफ इस आइडेंटिकल एंड इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन में पाया जाता है, और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सेकंड वन, चेरिश करना और फॉलो करना नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की. फोर्थ, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. डिपेंड करना कंट्री को और रेंडर करना नेशनल सर्विस जब कॉल होता है. ठीक है, मतलब मान लीजिए कहीं अगर फॉर इंस्टेंस इमरजेंसी इज बीन मेड और एनी कंट्री अटैक, सो इट्स फंडामेंटल ड्यूटीज टू डिफेंड योर कंट्रीज. मीन्स एवरीथिंग इज नॉट डन बाय आर्मी. Okay, so basically you have done your something to your own. And also when they call that okay, we want people 5 lakh 10 lakh, so you have to be goes on, you have to be volunteer for that. Okay, now fifth point, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religion, linguistic and religion or sectional diversity, and to renounce practice derogatory to dignity of women. Getting the point? सो बेसिकली डेगोटरी मीन्स कि जो औरतों को कम रिस्पेक्ट मिलती है उसको हटाया जाए, रिनाउंस की जाए प्रैक्टिस जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है. मतलब अगर कोई भी डिग्निटी ऑफ वुमेन को हर्ट होता है तो उस प्रैक्टिस को हटाया जाए, जैसे कि बाल विवाह हो गया, एनीथिंग लाइक दहेज, ये वो सब, इन सबको हटाया जाए. तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है. नाउ 6 पॉइंट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर. तो इसका जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए. Okay, then 7, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures.
सो बेसिकली नेशनल एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, इनको सबको बचाया जाए और कंपेशन हुआ जाए लिविंग क्रिएचर्स के लिए। एट्थ, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। डेवलप की जाए साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म, इंसानियत, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ओके, देन एट्थ, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को और एब्जॉर करना वायलेंस को, हटाना। नाइन्थ, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशनल constantly rises to higher level of endeavor and achievement। ओके, सो बेसिकली एक्सीलेंस करना हर स्पेयर में और इंडिविजुअल की जो कलेक्टिव एक्टिविटी है उसमें भी महारत हासिल करना और नेशन को ऊंचाइयों पर पहुंचाना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है। अब 10th आता हमारा, टू प्रोवाइड opportunity for education to his child or ward between the age of 6 or 14 years. This duty was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002। So basically प्रोवाइड करना एजुकेशन अपने बच्चे को, अपने वार्ड को 6 से 14 ईयर्स तक, ये ड्यूटी एडिट की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। तो ये हो गए हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिनको फॉलो अप करना ही करना है। लाइक कोई मतलब ये नहीं है कि कोई दबाव है आप पर, लेकिन ये मतलब अगर आप ये बेसिकली ये है कि अगर आप कोर्ट में अगर आप कहो कि इस बंदे ने फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करी है, या फिर कोर्ट कह सकता है कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रिजर्व नहीं कर रखा है, उस पर भी एक्शन ले सकता है और एक्ट ले सकता है। लेकिन बेसिकली आप ये कोर्ट में नहीं आ सकते हो कहते हुए कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने फॉलो नहीं करी। बट वो एक पॉइंट कंसिडर कर सकता है, वो भी कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट के साथ और कुछ बेहतरीन चीज़ निकाल सकता है उनमें से। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही पहलू, 2-3 पहलू देख के वो चीज़ों को फॉलो अप कर सकता है। नाउ फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, फीचर्स क्या हैं? सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज़, कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं, वाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज़। मतलब कुछ तो आपको आपका श्रद्धा भाव है तब करो, और दूसरी कुछ आपको करनी ही करनी है। फॉर इंस्टेंस चेरिशिंग नोबल आइडियल और फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ मॉरल रिस्पेक्ट। ओके, आप नहीं अगर भगत सिंह को मानते हो वो आपकी इच्छा है, बट द रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करना मतलब फंडामेंटल राइट सब कुछ रिस्पेक्ट करना, पूरे पोजिशन को रिस्पेक्ट करना। नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम इज़ अ सिविक ड्यूटी। ठीक है, अब इसमें ये आप नहीं कह सकते कि मॉरल ड्यूटी है, ये तो सिविक ड्यूटी है। नेशनल फ्लैग को अगर आप कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में हो वहाँ पर अगर उसका आप सही से नहीं करते हो तो वो बहुत ख़राब है, और नेशनल एंथम को अगर आप नहीं मतलब मायने देते हो तो वो भी बहुत ख़राब है। तो ये आपकी सिविक ड्यूटी है, ये आपकी मॉरल पर्सपेक्ट नहीं है, ये सिविक ड्यूटी के अंदर आता है। ठीक है, सेकेंड, दे रिफर टू सच वैल्यू विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अदर वर्ड दे इंसेंशियली कंटेन सच एज कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू इंडियन वे ऑफ लाइफ। सो जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है उससे कोडिफिकेशन करना। थर्ड पॉइंट, द फंडामेंटल्स आर कॉन्फाइंड टू सिटीजन ओनली, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर्स। तो कहने की बात है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो किसको मिले, वो फॉरनर्स को भी मिले, जीने का अधिकार ये वो सबको मिला है। बट अगर हम देखा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर तो वो सिर्फ एक्सटेंड वो किसको करनी है, जो हमारे अंदर रहते हैं, जो लोग रहते हैं, फॉरनर्स उसको नहीं करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो अप। गेट द पॉइंट। Then fourth one is like the directive principle, the fundamental duties are also non-justiciable। वो जस्टिसेबल नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर दैट डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट। आप डायरेक्ट इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते कोर्ट के द्वारा। मोर ओवर देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वॉल्यूशन, इवन यू वॉल्यूट द fundamental duties, there is no legal sanction, however the parliament is free to enforce them by suitable legislation। but parliament if think that okay ये फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलोअप होनी चाहिए तो वो कर सकता है, सुटेबल लेजिस्लेशन से वो एक्ट ला सकता है और अमेंडमेंट कर सकता है और इनको फॉलोअप करा सकता है। बट वो ये देखो सिंपली बात है, अगर कोई ऐसी पार्टी करती है तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो खुद फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं करते। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बहुत बात की चीज़ें हैं। गेट द पॉइंट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या सिग्निफिकेंस है? तो इंस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5 चीज़ों करती हैं जो बहुत अच्छी चीज़ हैं। तो वो है पहला, दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन दैट बाय एंजॉइंग देयर राइट्स दे शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ दे ओई टू देयर कंट्री।
their society and to their fellow citizens. Second, they serve as a warning against the anti-national and anti-social activity like burning the national flag, destroying public property, and so on. Third, they serve as a source of inspiration for the citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. They create a feeling that the citizens are not mere spectator but active participant in the relation of नेशनल गोल. ओके, नेशनल गोल में से वो स्पेक्टेटर नहीं है जो देखने के लिए है, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है. फोर्थ, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. Like for example, in 1992, the Supreme Court ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law is a question seek to give effect of a fundamental duty, it may consider such a law be reasonable in relation to Article 14 equality before law or Article 19 6 freedom and thus save such law from unconstitutionality. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप फॉलो की तरह ले सकते हो और देख सकते हो कि कहीं कुछ गलत लॉ तो नहीं बनाए जा रहे हैं और वैलिडेट करने के काम आ सकता है. फिफ्थ पॉइंट, दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ. वो इन्फोर्सेबल है लॉ के मुताबिक. हैंस द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ दैम. तो पार्लियामेंट अगर चाहे इन फ्यूचर दे कैन फॉलो अप द सेम एंड वो चीज़ें ऐड अप कर सकता है और इसके लिए रूल फॉलो अप बना सकता है. ये सब चीज़ें. अब दे आता है वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन. वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन क्या है? कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन 1999 में निकाला था. इसने क्या कहा था? आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. उसने कहा था कि हम लीगल क्या आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो उसने कहा था फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉरर एक्ट 1971. जो नेशनल हॉनर एक्ट है, ऑनर नेशनल ऑनर जो एक्ट है 1971 प्रिवेंट डिसरिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the national flag and the national anthem. Second, तो बेसिकली जो ये वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन है उसने क्या कहा? उसने कहा कि कुछ इम्प्लीमेशन होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में. उसने कहा कि कुछ लीगल प्रोविज़न होनी चाहिए. तो जो उसको फॉलोअप मिला, जो चीज़ मिली कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उसने जो बनाया वो ये था, द वेरियस क्रिमिनल लॉ. सेकंड पॉइंट ये है, द वेरियस क्रिमिनल लॉ इन फोर्स प्रोवाइडेड फॉर पनिशमेंट फॉर इंकरेजिंग इनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल मीन्स. तो ये सब क्या? उसने कहा कि कोई अगर पर्सन को लड़ाया जाता है सेक्स पे, लैंग्वेज पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, रिलीजन पे, सो ऑन पे, तो वो पनिशमेंट होना चाहिए. थर्ड, उसने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, ये होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, द इंडियन पीनल एक्ट IPC डिक्लेयर्ड द इम्प्यूटेशन एंड एडिशन प्रोड्यूस नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ एज पनिशमेंट ऑफेंस. फिफ्थ पॉइंट ये था कि द अनफुल लॉ एक्टिव प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1965 प्रोवाइडेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन. ठीक है, वो सब ठीक हो गया. देन सिक्स वन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो ये सब एक्ट था. तो बेसिकली वर्मा कमेटी का एक मेन मोटिव ये था कि आइडेंटिफाई करो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और लीगल प्रोविजन इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो लीगल प्रोविजन फाइंड करना कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. दैट्स इट, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ बीन completed. Thank you.